Good morning, class 11th. We are discussing our chapter 1 business studies. Today I'm sending you notes of this chapter, so kindly note it down. This part we have already discussed, meaning of business. We'll discuss it later when this history part will end, history of trade and commerce, and indigenous banking system. Hundi also we have discussed, and types of hundi and its functions also we have discussed, so kindly note it down. Now today we'll discuss rise of intermediaries, maritime trade, and some more topics. सो राइट ऑफ इंटरमीडियरीज, सबसे पहले तो ये देखते हैं इंटरमीडियरीज होते क्या हैं. इंटरमीडियरीज मीन्स अ चैनल, अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, अ लिंक बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. सो उनके बीच में कौन से लिंक हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से ऐसे, जैसे कमीशन एजेंट हुआ, ब्रोकर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ. प्रोड्यूसर हर जगह तो अपनी जो गुड्स हैं उसकी सप्लाई कर नहीं सकता, ठीक है. सपोज यू आर स्टडिंग फ्रॉम दिस मोबाइल, सो दिस मोबाइल कैन नॉट बी अवेल्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरर्स. So these commission agent, broker and distributors are helping in the distribution of the goods. Okay, so these are the intermediaries. As well as banks, insurance companies also work as intermediaries because they also somewhere help to producers as well as us also. When we are in need of money, we approach to bank only. So means all these are acting as a link. So rise of intermediaries led a prominent role in promotion of trade. They provided financial security in return of risk taken. Risk taken में कैसे इन्होंने इंटरमीडियरीज जो भी थे, बैंक हुआ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुआ, कमीशन एजेंट हुआ, ब्रोकर हुआ, होलसेलर हुए, रिटेलर्स हुए, ये सारे इंटरमीडियरीज हैं. सो इन सब ने कैसे रिस्क में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की. दैट जो कमीशन एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, ये प्रोड्यूसर से गुड्स बाय कर लेते हैं बल्क में. इट मीन्स प्रोड्यूसर नीड नॉट टू वरी दैट गुड्स वुड बी सोल्ड आउट और नॉट. ओके, इट इज़ द टेंशन ऑफ दीज पीपल हु आर एक्टिंग एज अ चैनल इन बिटवीन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसर को एडवांस मनी अवेल करवा रहे हैं. ओके, these comprises of commission agent, broker, distributor. This I have told. Foreign trade were financed by loans. और foreign trade में सबसे ज़्यादा intermediaries help करते हैं because when exporter and importers are unknown to each other, these intermediaries means especially the bank of importer is acting as the main agent, main intermediary between exporter and importer. Then later with the emergence of credit transaction, export exceeded import and benefited indigenous banking system. जब credit transactions बढ़ने लग गए तो exports ज़्यादा होने लग गए और import and benefited indigenous banking system. और इससे जो indigenous banking system, indigenous में कौन कौन आते थे, सेठ आते थे, साहूकार आते थे, जगत सेठ आते थे. तो इससे इनको फ़ायदा हुआ because Seths, Sahukars only. So thus indigenous banking system was benefited. Then commercial bank and industrial bank evolved to finance trade and commerce, and agricultural bank evolved to provide short term and long term finance to agriculturalists. So they all benefited the whole economic system. Then maritime trade we also have discussed previously also. So trade maintained by means of sea is referred to as maritime trade. Maritime trade was another important branch of global trade network because through this maritime route India was trading with other countries globally. It was an active country. मलाबार कोस्ट ऑन विच मुजिरिस इज़ सिचुएटेड. एक पोर्ट है मलाबार कोस्ट पे, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था
और अभी भी फेमस है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पोर्ट है ये. And pepper was particularly valued in Roman Empire and was known as black gold. It was in the search for an alternate route to India for spices. वैसे भी maritime route को spice route भी कहा जाता था वैसे, और maritime route से silk भी trade होता था. So it led to the discovery of America by Columbus in the closing years of 15th century, and also brought Vasco da Gama to the shores of Malabar in 1498 because of this spice trade only. Then Calicut was such a bustling emporium that it was even visited by Chinese ships to acquire items like frankincense. Frankincense means agarbatti, essential oil, and myrrh, fragrant resin used in perfume and medicines from Middle East, and as well as pepper, diamond, pearls, and cotton from India. Mandal Coast, Pulicat was a major port in 17th century. Textiles were the principal export from Pulicat to Southeast Asia. Then merchant corporations came. Now what merchant corporations means? Those who became little powerful merchant, they all made their corporations to protect themselves from the any kind of exploitation. So they formed to protect the interest of traders. They framed their own rules of membership and code of conduct, which kings also accepted. In every country such type of corporations were there. So our country India also, such type of corporations were emerged, and powerful merchants made their corporations. Trade and industrial taxes were major source of revenue, and the chief directly deal with king, tax collector, and settle market toll on behalf of merchant at fixed sum of money. सो द चीफ ऑफ दीज कॉरपोरेशन, अब जो कॉरपोरेशन बनी उनका चीफ जो हो गया, अब उस चीफ ने डायरेक्टली वो किंग से मिल के, और मीन्स इफ़ सपोज जैसे इंडिया ने यूरोप को एक्सपोर्ट किया, तो अब यूरोप के किंग से मिल के, यूरोप के जो भी उनके ट्रांजैक्शन के जो रूल्स हैं उनसे मिल के टैक्स डिसाइड कर लिया, और वो इंडिया के जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, दूसरे मर्चेंट्स हैं, उनको बता दिया. So he, chief of this corporation, directly deal with king, tax collector, and settle market toll. जो भी टोल लगता था, जो भी टैक्स लगता था, जो भी एंट्री फी थी, कस्टम था, जो भी था XYZ. So on behalf of merchant at fixed sum of money. Okay. Now major trade centers also were there. Patliputra, Peshawar, Taxila, Peshawar. These are in Pakistan now. इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरा, भरूच, कावेरीपट्टा, and Tamralipti. And all these things were traded. Like export of stones was taking place from Patliputra. Then wool and import of horses from Peshawar. चिल्ड्रन, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज के लिए. इसमें इस जो टॉपिक में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में केवल हुंडी वाला जो एक टॉपिक है वही मेन है. एंड देन लिटिल हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ है,